Good morning everyone. My name is Kamini, Assistant Professor at City Group of Institution, Maqsuda, Jalandhar. Here I am going to give presentation on the topic accounting concepts and principles. First of all, what is the meaning of accounting? Accounting refers to a process of recording, classifying, summarizing, analyzing the business transactions and interpreting the results thereof. So this accounting process is based upon some accounting principles. So now first of all we will discuss about the meaning of accounting principles. Accounting principles refers to the rules and actions adopted by the accountants globally for recording accounting transactions. Now accounting principles are classified into two categories. One is accounting concept and another is accounting convention. Now we will discuss about accounting concepts. Accounting concepts क्या होते हैं? Accounting concepts जो होते हैं वो assumptions and conditions जिसके ऊपर हमारा सारा accounting का system टिका होता है. These are those assumptions and conditions upon which the science of accounting is based. और इसको हम accounting standards भी बोलते हैं. तो there is no hard and fast rule कि we have to follow our accounting concepts, but we must follow and we should follow the accounting concepts. Reason is that कि अगर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फॉलो करेंगे तो इससे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाकर कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी. बट अगर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करे, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपके रिजल्ट्स जो हैं डेट वुड नॉट बी प्रॉपर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही रिजल्ट ना शो करे रिजल्ट. तो इन रीजंस के कारण there is general tendency on the part of every organization to follow these accounting concepts. Now what is the meaning of accounting conventions? Accounting conventions are those customs and traditions that assist the accountants in preparing accounting statements. ये वो guidelines होती हैं, वो customs होते हैं, हमारे वो रीति रिवाज होते हैं जो एक accountant को follow करने चाहिए while preparing accounting statements. मतलब सेम है इसमें भी कि it is not compulsion कि you have to follow these accounting concepts and conventions, but for your sake of convenience but for the sake of some legal obligations, it is necessary that you must follow these accounting conventions. Now we will discuss in detail all these accounting concepts and conventions. First concept is business entity concept, money measurement concept, going concern concept, historical cost, prudence or conservatism, materiality, objectivity, consistency, accruals or matching, realization, uniformity, disclosure and relevance. Now we will discuss each and every concept in detail. First concept is business entity concept. ये concept हमें क्या कहता है कि business and businessman are treated as two separate entities. For this, any amount introduced by the businessman into business is known as capital, and any amount withdrawn by the business for personal use is treated as drawings. तो हम इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को हम अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे. So that is why it is said that any private and personal incomes and expenses of the owner should not be treated as incomes and expenses of the business. Now what are the examples of the business entity concept? Insurance premium for the owner's house should be excluded from the expense of the business. Obviously insurance premium जो है हम अपना खुद का पे कर रहे हैं. For example, life insurance premium, it is totally our personal expenditure that we are paying premium for on our life insurance. So it should be excluded from the expense of the business. Then the owner's property should not be included in the premises account of the business. And then any payment for the owner's personal expenses by the business will be treated as drawings and reduce the owner's capital contribution in the business. And now what is the treatment of drawings? We always deduct the drawings from the capital in the balance sheet. Now second concept is money measurement concept. So what is money measurement concept? According to this concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts. For example, honesty, intelligence, no doubt these are very important aspects of any organization, but they can't be recorded in the books of accounts. Reason being that they are not in financial terms. So all transactions of the business are recorded in terms of money. It provides a common unit of measurement. Now, for example, market conditions, technological changes and efficiency of management would not be disclosed in the accounts. Next concept is going concern concept. अब हमें going concern concept क्या कहता है? According to this concept कि हमने अपने business organization
को में ये अज्यूम करना है कि हमारा बिजनेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलने वाला है. शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर में गो, बट आवर बिजनेस विल गो ऑन फॉर एवर. कि हम कोई भी हम लोग हैं, हम शेयर होल्डर हैं, हमने कोई सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, हम कभी भी उनमें से शेयर्स को विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी हम अपने शेयर्स और बाय कर सकते हैं, बट इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. आवर कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर. सो दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. सो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, इट विल गो ऑन फॉर एवर, दिस इज़ द ओनली रीज़न डैट वी रिकॉर्ड ऑल अवर एसेट्स ऑन कॉस्ट. अगर हम ये सोच के चलें कि हमारे अपकमिंग ईयर्स में आफ्टर finalizing this year accounts, like on 31st March we are going to shut down our business, we will always record our assets on the current market value. But here we always think that ki we are going to continue our business forever, so that is why we always record our assets on cost price. Now what are the various more examples of this concept? Possible losses from the closure of the business will not be anticipated in the accounts, and various prepayments, depreciation provisions may be carried forward in the expectation of proper matching against the revenues of the future period. Like अगर हम कोई prepaid expenses करते हैं तो हम इसी basis पर करते हैं कि we are not going to close our business. And depreciation provision, what is the meaning of depreciation? Depreciation means when value of asset is decreased due to wear and tear, obsolescence and so on. So अगर हम depreciation हर year में carry forward करते हैं, made by straight line method और written down value method, हर year में carry forward करते हैं, तो हर year में तो हम carry forward तभी करेंगे ना अगर हमें पता है कि हम अपने बिजनेस को फॉर एवर कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल एसेट्स शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एट द कॉस्ट ऑफ परचेज इंस्टेड ऑफ करंट वैल्यू. कि हमने अपने एसेट्स को हमेशा करंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो करना है, करंट वैल्यू पे शो नहीं करना. Historical cost concept and going concern concept are interrelated, as according to this concept कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर एवर कंटिन्यू करेगा, इसीलिए हम अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं. अगर हमें ये लग रहा है कि हमें अपना बिजनेस थोड़े टाइम में बंद कर देना है, देन हम कभी भी हमें तो उसकी फिर करंट वैल्यू चाहिए, वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड एसेट्स ऑन द करंट वैल्यू. सो दीज टू concepts, historical cost and going concern concept, are correlated. Now example, the cost of fixed assets is recorded at the date of acquisition cost. Acquisition cost includes the expenditures made to prepare the asset for its intended use. It includes the invoice price of the assets, freight charges, insurance or installation cost. Now next concept is prudence or conservatism. Now what this concept says, according to this concept, basically this concept is based on the one a principle that anticipate no profits but provide for all possible losses. Like अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट आएंगे तो we should not be ready for that, कि we should always welcome our profits ना, but if there would be loss it would be a great drastic for the organization. That is why we must have a provision beforehand. इसीलिए अगर कोई भी लॉस आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें पता है. फॉर एग्जांपल डेटर्स, अगर हम अपने डेटर को सामान हमने उधार पे दिया है, ही इज़ गोइंग टू पे आफ्टर 2 or 3 months, तो देयर मस्ट बी सस्पिशियस नेचर ऑफ आवर माइंड डैट हो सकता है कि वो पर्सन पैसे लेकर भाग जाए, वो हमें वापस ना करे. सो देयर शुड बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन एडवांस, सो डैट कि अगर कल को वो बंदा पैसे लेकर भाग ही जाए, अगर देयर शुड बी बैड डेट्स, तो वी शुड यूज़ फंड्स फ्रॉम debt reserve. And another example is a provision for depreciation. Like whenever we buy an asset, it is sure that its value is going to decrease in upcoming years. We should have to write off the value in upcoming years. So therefore we always need funds for that. So therefore we must have the provision for depreciation beforehand. Now what are the various examples of this concept? Stock valuation sticks to the value of lower of cost in net realizable value. Then, as I have explained earlier, the provision for doubtful debts should be made. Fixed assets must be depreciated over their useful economic lives. Now, next concept is materiality. According to this concept, only important and material information should be recorded in the books of accounts. Immaterial information should not be recorded. If we record
unnecessary or unimportant information in the books of accounts, there is possibility that our accounts would become fake, and whenever we need an important information from that, it would be of greater difficulty for us. That is why only material information should be recorded and immaterial amounts must be segregated from the material amounts. Now, materiality depends upon the size and nature of an item. Now, what are the various examples of materiality concept? Small payments such as postage, stationery and cleaning expenses should not be disclosed separately. They should be grouped together as sundry expenses. Then, the cost of small valued assets like pencil sharpeners, paper clips, that should be written off to the P&L account as revenue expenditures, although they can last for more than one accounting period. We know that कि इन चीज़ों का खर्चा जो है अपकमिंग ईयर्स में आएगा, अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर्स में, बट हम इनको पहले ही अपने जो है P&L अकाउंट में से एज अ एक्सपेंस शो करके वी विल डिडक्ट इट. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी. Objectivity means कि we always record transactions on the basis of some documentary evidence. Then accounting information should be free from bias and capable of independent verification. The information should be based upon verifiable evidence such as invoices or contracts. For example, the recognition of revenue should be based on verifiable evidence such as delivery of goods or issue of invoices. For example, किसी पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है, उसने किसी के 1 लाख का सामान खरीदा, देन वो मेरे पास आता है कि हमने जी 1 लाख का सामान बाय किया है. तो क्या मैं उसके कहने पर, नो डाउट हो सकता है कि वो पर्सन मेरा बहुत ज़्यादा रिनाउंड हो, खास हो, बट कि वो उसके कहने पर आई विल नॉट रिकॉर्ड दैट 1 लाख इन माई बुक्स. आई विल tell him that he should show me some invoices or bills or receipts or memos or whatever he has used as documentary evidence. Then I will record those transactions only then when I will see those transactions. Then consistency. Now, what is the meaning of consistency? Consistency means कि companies should choose the most suitable accounting methods and treatments and consistently apply them in every period. कि जो भी हम अपनी policies वगैरह follow कर रहे हैं उसमें हमें consistent रहना चाहिए. We should not change the policies again and again. कि हमें change, no doubt कई बार ज़रूरी होता है कि changes करने पड़ते हैं, but changes are permitted only when the new method is considered better and can reflect the true and fair view of the financial position of the company. The change that effects on the profits should be disclosed in the financial statements. कि जो भी हमारे changes हैं, जो effects आ रहे हैं उसके profits के ऊपर, वो हमें अपने financial statements में disclose करने हैं. Examples of consistency concept are: if a company adopts straight line method and should not be changed to adopt reducing balance method in other period, like it is the method of calculating depreciation. There are two methods for calculating depreciation. One is straight line method, another one is written down value method. If in one accounting year we have followed straight line method, we will not change the written down value method in the next accounting year without the prior approval of the top management or if there is any urgency. If a company adopts weight average method as stock valuation, should not be changed to other method first in first out. As these are the various methods of stock valuation: first in first out, last in first out. So we should not method, if we have followed the last in first out method, and we should always remain consistent to that method. We should not change unless and until there is any urgency. Next is accrual concept or matching concept. Now, what is accrual concept? Accrual concept क्या होता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने करंट ईयर के एक्सपेंसेस को मैच करना है हमारी करंट ईयर की रेवेन्यू के साथ. आवर करंट ईयर एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस. और हम अगर इस मैचिंग कंसेप्ट को तभी फॉलो कर पाएंगे इफ़ वी हैव फॉलोड द accrual concept. There are two bases of our accounting. One is cash basis and another one is accrual basis. Now what is cash basis? According to cash basis कि हम अपनी transactions को तभी record करेंगे if it is received or paid in cash. But on the accrual concept कि अगर वो transaction हमारी current year की है, चाहे वो cash में receive हुई है, नहीं हुई, cash में pay हुई है, नहीं हुई, we will always record that transactions. तो इसमें इसीलिए हमारे जो बेसिकली अकाउंट्स हैं वो किस बेसिस पर बनते हैं? एक्रूअल बेसिस के ऊपर. तो अगर हम अपने अकाउंट्स को एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं तो देयर मस्ट बी करंट ईयर एक्सपेंसेस मैच शुड द करंट ईयर रेवेन्यूज. नाउ फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर. जैसे हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, वो अभी तक पे नहीं हुए बट दे बिलोंग टू
that particular accounting year. So we must add outstanding expenses in profit and loss account or trading account and shown as the liability in the balance sheet. And on the other hand, like prepaid expenses are the expenses which belongs to the next accounting year but paid in advance. तो prepaid expenses जो है हमारे current accounting year से belong नहीं करते. That is why we always deduct that prepaid expenses from particular expense in profit and loss account, and it would be shown as an asset under the balance sheet. Next, इसकी more examples हैं. Expenses incurred but not yet paid in current period should be treated as accrual or accrued expenses under current liabilities. Expenses incurred in the following period but paid for in advance should be treated as prepayment expenses under current assets. Depreciation should be charged as the part of the cost of fixed assets consumed during the period of the use. Now, what are the various problems in the recognition of expenses? कि हमें जब हमने expenses को recognize करना है कि whether they belong to current accounting period or previous year or the next following year, so there must be some problems. So what are these problems? Normally, expenses represents resources consumed during the accounting period. Some cost may benefit several accounting periods. For example, developmental expenditures. अगर हम एक बार खर्चा कर रहे हैं, but we will take benefit from that expenditure for 10 to 15 years. और depreciation of fixed assets कि हमें उसको write off करना है हर साल. तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. नहीं, what will be the recognition criteria for expenses? So ये डिफ़िकल्टी ना आए उसके लिए हमें जो है अपना recognition criteria होता है जो हमें फॉलो करना है अपने expenses को recognize करने के लिए. So first of all, there must be association between the cause and effect. कि हमारा कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेल्स पर्सन है, उसने कोई सामान बेचा, तो सेल्स कमीशन हमने उसी पीरियड की कैलकुलेट करनी है व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड, बट नॉट व्हेन दे आर पेड, बिकॉज वी आर फॉलोइंग एक्रूअल कंसेप्ट कि अगर सेल्स कमीशन जो है जिस पीरियड में उसने प्रोडक्ट को बेचा है उस साल की ही कैलकुलेट की जाएंगी, ना कि जब हम उसको कैश में सेल्स कमीशन पे करेंगे. जिस ईयर के साथ सेल्स बिलोंग करती हैं उसी ईयर के साथ जो है सेल्स कमीशन जो है वो कैलकुलेट करी जाएंगी. Then expenses are recognized on the basis of a direct association between the expenses incurred on the basis of direct association between the expenses incurred and revenues earned. For example, the sales commission should be accounted for in the period when the product is sold but not when they are paid. Now, what is the systematic allocation of cost? कि हमने किस तरीके से अपनी cost को allocate करना है. जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी हमने कोई एसेट बाय किया, वी नो दैट इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम. तो इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है हमें अपनी प्रॉपर, हम जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हमने उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी है. से एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज़ 15 years, तो वी विल ऑलवेज कैलकुलेट और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द 15 years. इट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. देन इज इमीडिएट रिकॉग्निशन, कि हमने अपने एक्सपेंसेस को सर्टेन फ्यूचर बेनिफिट के लिए और इवन विदाउट द फ्यूचर बेनिफिट, कोई कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट जिनसे हमें नहीं मिलता या मिलता है बट वी आर नॉट सर्टेन कि हमें कब मिलेगा, तो उन केसेस में उन एक्सपेंसेस को हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही राइट ऑफ कर देना. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक लॉसेज हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, रिसर्च का खर्चा हो गया, तो ये हम किसी कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के साथ स्पेसिफिकली बिलोंग नहीं करेंगे, बिकॉज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इट इज़ नॉट सच एक्सपेंस डेट कि आपने इस बार करना है, नेक्स्ट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट इन द फ्यूचर. डेट इज़ वाई वी विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज आवर सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड. Next concept is realization concept. What is the realization concept? That revenue should be recognized only when major economic activities have been completed. कि हम कब मानेंगे कि हमारा जो एसेट है, हमारी जो इनकम है वो रियलाइज़ हुई है. तो हम कब मानेंगे कि हमारी इनकम रियलाइज़ हुई है? वेदर एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, वेदर एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ ऑर्डर्स, वेदर एट द टाइम ऑफ फुलफिलिंग द ऑर्डर्स, और वेदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, और वेदर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कैश फ्रॉम द कस्टमर. तो हम इन स्टेजेस में से कब मानेंगे कि हमारी इनकम रियलाइज्ड हुई है? द बेसिक रीज़न फॉर दिस इज दैट वी विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज अवर इनकम व्हेन ऑनरशिप इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. जब सेल्स कंडक्ट करी जाती हैं, जब एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर, ओनली देन वी विल रियलाइज अवर इनकम. देन सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू कस्टमर्स और सर्विसेज आर रेंडर्ड. नाउ, अब कब हमने ये रूल्स हैं इसके कुछ कि हमने किस तरीके से मानना है कि हमारी रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हुई है.
द कंसेप्ट प्रोवाइड्स दैट रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड, कि जब वो इनकम कमाई गई है हमने तभी माना है, नॉट व्हेन, क्योंकि हम कैश कंसेप्ट तो फॉलो कर ही नहीं रहे, वी आर फॉलोइंग अवर एक्चुअल कंसेप्ट। तो सो जब सेल कंडक्ट करी गई है, जब कमाई गई है, तब हमने इसको रिकॉग्नाइज करना है, ना कि जब तक की मनी रिसीव हुई। Then a receipt in advance for the supply of goods should be treated as prepaid incomes under current liabilities. And since revenue is a principal component in the measurement of profit, the timing of its recognition has a direct impact on the profit. Now, what will be the we always face difficulties. An organization must face difficulties while recognizing the revenues. So there is a recognition criteria for such revenues. That is, the uncertain profit should not be estimated, whereas reported profit must be verifiable. Now, revenue is recognized when major earning process has been completed. Further, the cost for the completion of the earning process are very slight or can be accurately ascertained, and the buyer has admitted his liability to pay for the goods and services provided, and the ultimate collection is relatively certain. तो ये सब कुछ हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है डेट मस्ट बी फॉलोड अंडर दिस कंसेप्ट, कि जब हमने मेन थिंग इज मेन क्रक्स यही निकलता है कि जब भी हम अपने सेल को कंडक्ट कर रहे हैं, जब भी हमने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रही है, मीन्स एट द पॉइंट ऑफ द सेल, तभी हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो अर्न हुई है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने सेल टू रिटर्न बेसिस के ऊपर अपने गुड्स को बेचा है। सेल टू रिटर्न बेसिस क्या होता है कि अगर हमने कस्टमर को गुड्स देने हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है उसकी कंजम्पशन से, तो ही विल बाय एंड पे फॉर द गुड्स, वो सेल हम नॉर्मल सेल की तरह कंसिडर हो जाएगी। बट अगर उसने अभी तक वो सामान की कंफर्मेशन नहीं दी कि वो सामान उसको पसंद आया या नहीं आया, तब तक हम उसको फाइनल सेल नहीं मानेंगे और वो नॉर्मल सेल कंसिडर नहीं होएगी। देन इट विल बी एडिड टू द क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट until and unless sale is confirmed by the buyer. So, goods sent to our customers on sale or return basis. This means that the customer do not pay for the goods until they confirm to buy. If they do not buy, those goods will return to us. Then, goods on the sale to return basis will not be treated as normal sales and should be included in the closing stock unless the sales have been confirmed by the customers. Now, what are the various problems in the recognition of revenue? Normally, revenue हम तब recognize करते हैं when there is a sale. तो कौन सा पॉइंट होता है सेल का, तो यही डिटर्मिन करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो पॉइंट ऑफ सेल्स इन द अर्निंग प्रोसेस इज सिलेक्टेड एज अ मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज। बट कुछ कई केसेस में ऐसे होता है कि जो रेवेन्यू है वो लॉन्ग एंड कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इस केस में डिफ़िकल्टी अराइज हो जाती है। अगर हम लंबे टाइम में अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो किस स्टेज में से हमें कितनी रेवेन्यू अर्न हुई है, समटाइम्स इस केस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। Therefore, revenue is permitted to be recorded other than at the point of sale, कि जब भी सेल कंडक्ट हुई उस टाइम पे हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रादर कि हम नेक्स्ट ईयर में करें उसे नेक्स्ट ईयर में करें, इट वुड क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्क्लोजर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं, एज देयर आर द वेरियस यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट योर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, योर वर्कर्स एंड सो ऑन। सो ये सारे यूज़र्स को किसी न किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनीज टू डिस्क्लोज ऑल सच इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दे कैन कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स, कि देयर शुड नॉट बी एनी हिडन इन्फॉर्मेशन। अगर हम हाइड करेंगे, इट विल पुट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एज वेल एज ऑन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द enterprise. All material and element information must be disclosed in the financial statements. Next concept is uniformity. Now, what is uniformity? Different companies within the same industry should adopt the same accounting methods and treatments for like transactions. कि हर एक कंपनी जो है सेम इंडस्ट्री में सेम टाइप के जो है प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, पॉलिसीज फॉलो करेगी। इट वुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ऑन requirements. For example, कि there are two types of comparisons, intra-firm comparison and inter-firm comparison. Intra-firm comparison क्या होता है कि जब हम within the firm अपना comparison कर रहे हैं, say it is 2021 का comparison हम कर रहे हैं अपना 2019 के साथ,
बट दिस इज नोन एज इंट्राफॉर्म विद इन द कंपैरिजन कि हमारी कंपनी के पिछले साल प्रॉफिट्स इतने थे, इस साल प्रॉफिट्स इतने हैं. बट अनदर वन इज इंटरफॉर्म कंपैरिजन. इंटरफॉर्म कंपैरिजन मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स. सो दीज टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द पॉलिसीज. अगर दोनों के डाइवर्स पॉलिसीज फॉलो होंगी, डाइवर्स मेथड्स फॉलो किए हुए हैं, सो इन दिस केसेस कंपैरिजन वुड नॉट बी द पॉसिबल. नेक्स्ट is relevance concept. According to this concept, कि financial statements should be prepared to meet the objectives of the users. The only relevant information should be disclosed in the books of accounts. If we will record unrelevant information in the books of accounts, it would create great difficulty for the users to find out the relevant information from that. Therefore, only relevant information should be recorded in the books of accounts. Only that information which can satisfy the needs of the most users is selected and recorded in the financial statements. Now, next concept is accounting period concept. What is accounting period concept? Accounting period concept says that कि जैसे हमें पता है कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ईयर्स तक चलने वाला है, इट इज़ अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अगर हम अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक चलाने वाले हैं तो इस केस में ये डिफ़िकल्टी आ सकती है कि अगर हमने अकाउंटिंग पीरियड्स में अपना बिजनेस डिवाइड नहीं किया हुआ तो इससे क्या होएगा कि अगर हम सपोज 20 ईयर्स के बाद हम अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने लगे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाई आफ्टर 20 ईयर्स, तो क्या उसका कोई यूज़ है? नेवर. बिकॉज 20 साल के बाद ठीक है आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, नाउ यू कांट टेक एनी करेक्टिव एक्शन. सो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं. इसीलिए we always divide life of our business in several accounting years. So there are two types of years, financial year and calendar year. Financial year starts from 1st of April and ends on 31st March, and calendar year starts from 1st of January and ends on 31st December. So generally accounts are prepared on financial year basis. तो हम ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर्स में हम अपनी लाइफ ऑफ द बिजनेस को डिवाइड करते हैं और हर साल हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टी अराइज ना हो. अगर कोई लॉसेज आ रहे हैं तो वी ऑलवेज टेक सम करेक्टिव मेजर सो डैट हमें फ्यूचर में ये डिफ़िकल्टी दोबारा राइज ना करनी पड़े, वो लॉस दोबारा फेस ना करना पड़े. सो दिस इज़ नोन एज अकाउंटिंग पीरियड concept. These were the various concepts and conventions upon which the science of accounting is based. So every accountant must follow these concepts and conventions while recording business transactions in the books of accounts to run its business smoothly, and so that we should not follow any legal intervention or such statutory obligations. So therefore we must follow these concepts and conventions for the smooth and efficient conducting of our business. Thank you.